we'll learn about how we can create multiple containers, right? So Docker Compose तमे एते पर्यंत जानिथिले सिंगल कंटेनर केमती क्रिएट करिवा सिंगल कंटेनर भीतर हमें एप्लिकेशन डिप्लॉय करिवा एप्लिकेशन को एक्सेस करिवा तापरे हमें बहुत सारा काम करिचे तो बर्तमान हमें मल्टीपल कंटेनर जेमती कि हमें गोटे फुल स्टैक एप्लिकेशन डिप्लॉय कला बेले गोटे फुल स्टैक एप्लिकेशन से कोन कोन रहउची तार फ्रंट एंड रहउची बैक एंड रहउची डेटाबेस रहउची राइट तो हमें जिते बड़े माइक्रो सर्विस करूचे राइट माइक्रो सर्विस से कोन होची ना जो फुल स्टैक एप्लिकेशंस रोचे से फुल स्टैक एप्लिकेशंस को सेपरेट बट हमें कहबा पीस करिबा चंक हिसाब रे डिफरेंट सिस्टम रे बा डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करछबा तो ई केस रे हमें कोन करबा ना हम डिफरेंट कंटेनर रे डिप्लॉय करिबा जेमति फ्रंट एंड पई गोटे सेपरेट कंटेनर बैक एंड पई सेपरेट एंड डेटाबेस पई सेपरेट कंटेनर तो जो सेपरेट कंटेनर हबो तो ए कंबाइन करिकरी कोन सपोज हमर गोटे सिस्टम भितर हमें गोटे एप्लिकेशन को हमर डिप्लॉय करियार अछि राइट तो एटी गोटे कंटेनर हमें रन करबे एटी गोटे कंटेनर रन करबे एटी गोटे कंटेनर एटी गोटे कंटेनर तो ये सब कंटेनर कोन गोटे सिंगल एप्लिकेशन से केमते लिंक हेतो तो सिंगल एप्लिकेशंस रन होतो ये जो मल्टीपल कंटेनर्स हमें क्रिएट करिवा तो ताकू केमते हमें मैनेज करिवा ताकू केमते हैंडल करिवा राइट केमते क्रिएट करिवा तो समय ता पई गोटे सिंपल टूल होची डॉकर रे जोटा कि हमें कहूची डॉकर कंपोज ओके तो ता विषय हम बेसी जानिबा डॉकर कंपोज एक्चुअली त माने कोन और यूसेज कोन पई हमें यूज करिबा राइट सो डॉकर कंपोज is a tool for defining and running multi-container Docker applications. Docker Compose कौन पर यूज होची ना running multi-container Docker applications. जो Docker applications हमें यूज करें multiple container and it simplifies the management of interconnected services such as web application, database, caching layer, right? By allowing them to defined and managed as a single unit, right? जेमती को एग्जांपल जेमती डायग्राम रे बतली गोटे सिंगल यूनिट रे मल्टीपल कंटेनर को राइट कंबाइंडली हमें रन करबा पई हमको डॉकर कंपोज दरकार आउ एडी देखि परतो तमे डॉकर कंपोज रो से गुडे जो आइकन्स मन बनै छथि इमेज ता एकदम ऑक्टोपस having multiple tents, right? So multiple containers creating, right? This is the actual picture of the Docker Compose, right? So fine. Docker Compose is a tool for defining and running multi-container Docker applications, right? So इतनी ही तार definitions आउ वैसे definitions नहीं तो तुम भी पचारी परियो why we need Docker Compose because to run the multiple containers, right? And you know all the applications, right? Full stack applications to combine and running in a single environment, right? We need the Docker Compose. Okay, move Docker Compose. Okay. तामे जदि गोटे सिंगल एप्लिकेशंस और सिंगल कंटेनर बनाउछे देन इट्स ओके ता पई बहुत इजी जस्ट इंस्टॉल कर दिया सरला बट तमे जदि Docker Compose use करूछो then it will be easy for you to write the instructions and execute it. अच्छा तो Docker Compose रे हमें Docker फाइल ता हमें जानितले कोन जेतबे गोटे हमें हमर इमेज क्रिएट करबा Docker फाइल रे जो इंस्ट्रक्शंस सब लेखुतले सेटा बहुत सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट रे जस्ट कमांड्स हमें नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप लिखि चलते राइट बट इठी राइट Docker Compose रे हमको YAML फॉर्मेट यूज करियो पड़ियो we have to use YAML syntax okay so Docker Compose फाइल जोटा हम लिखियो एटा YAML syntax रहती तुम तो बते देबी त केमती कोन हमें Docker Compose फाइल लिखिबा राइट तो तार इंस्टॉलेशन सोची बहुत इजी हमें डायरेक्टली गोटे इंस्टॉलेशंस डाउनलोड करी जस्ट एटा गोटे लिखिछि बट what we can do we can just download it right we can just go there and download it let me show you so
suppose आमे docker compose download. Okay, so you can go to docs.docker.com. ଏଠି ଯାଇ ଆମେ installations ପାଇଁ docker compose installations ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବା, right? The ଯେକୌଣସି environment, suppose Linux ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, Linux ପାଇଁ you can just go ahead and install this. See, so environment ପାଇଁ ଏଠି installations ଦେଇଛି, but ତମେ ଯଦି stand alone ଚାହୁଁଛ install କରିବା ପାଇଁ, ତ ତା ପାଇଁ ତମେ ଯିବ stand alone ଆଉ ଏଠି କଣ କରିବ, just ତମେ download କରିବ ତାର .exe। बहुत सिंपल एटा स्टैंड अलोन टा बहुत सिंपल। ओके, इटा हला .exe फाइल गोटे docker compose रो .exe फाइल टा हमें डाउनलोड करबा, ताको परमिशंस देकरी तापर हमें यूज करबा, राइट? लेट मी शो यू हाउ वी कैन इंस्टॉल दिस docker। तो जोटा मु इट एग्जैक्टली द सेम थिंग इज गिवन हियर। आउ गोटे वे रे तुम इंस्टॉल कर पाइबो बाय यूजिंग pip। pip हला कोन पाइथन पैकेज मैनेजर, राइट? So using pip you can install docker compose, but this is the actual way to install the docker compose. If you are going working for your company and it's required that you have to install docker compose, so you need to select and download some specific version, right? Specific version of docker compose and then install it. You don't have to install it, you have to simply just copy that to the user local bin directory, because this is the executable script, right? Executable script, so you can directly execute it. You have to give the permissions, right? Executable permissions like we do for shell scripting, right? Okay. तो जमती स्टैंड एलोन आम इनस्टॉल करिबा, राइट? तो सिंपल मो कोन करछि, कॉल कमांड यूज करके ये लाइन टा मु पूरा कॉपी कर दोछि, हैला? पूरा कॉपी कर तो बुझे भी देबी एटा कोन एक्चुअली केमती यूज होछि। कौन कमांड यूज है कॉल, ओके, कॉल कमांड यूज कली -sl तार ऑप्शंस देली, ए जो लिंक टा दोछि जोटा कि हमर यूआरएल टा, राइट? जोठी कि हमर कोन कंपोज एग्जीक्यूटेबल फाइल अवेलेबल अछि, एटा गोटे path, right? Internet address path where our docker compose executables available. तो मु ए पाथ रु github.com docker compose रू डाउनलोड करिकरी रखुची कोठी हाइफन ओ ऑप्शन देकरी तर आउटपुट टा को रखिया मु यूजर लोकल बिन आउट ता नाटा चेंज कर दूची, एटी लंबा नाटा अछि, राइट? docker हाइफन compose हाइफन linux 8664, राइट? ता मु छोटो ना कर दूची docker compose सिंपल, जेमति कि हमें wget यूज करतले, राइट? सेम थिंग हमें एटी यूज करते wget url देकरी हमें चेंज करते डन, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गला, राइट? तो ये मुझे जब देखिए पाथ रे तो कोड डाउनलोड है ना यूजर लोकल बिन को, राइट? लेट्स गो टू यूजर लोकल बिन। एरर सॉरी इट फेल्ड एची डिनाइड कला, तो कौन पे डिनाइ कला ना परमिशंस नहीं एटी राइटिंग आउटपुट डेस्टिनेशन परमिशन डिनाइड, सी परमिशन डिनाइड। तो आप हम कौन करिया पड़ियो, जो कमांड हमें एग्जीक्यूट करतले, राइट? सेठी हमें कौन करिया sudo यूज करिया सुपर यूजर, राइट? सुपर यूजर यूज करिया। So let's do sudo, okay, so एबे डाउनलोड हो गला, राइट? तो मुझे जदी जिबी से पाथ कोबे docker compose डाउनलोड हो गला, राइट? तो हमें कौन करे नेक्स्ट स्टेप से कौन दीछि ना तार परमिशन चेंज करिया, जेमति कि हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल परमिशंस कोन स्क्रिप्ट कल लिखिला बेले चेंज करू, राइट? एटी कोन अछि रीड राइट रीड रीड अछि परमिशंस, हमें एटा एग्जीक्यूट करि परिबानी कारण एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नाही, राइट? तो chmod +x देकरी हमें, okay, again we have to use sudo super user to, okay?
देन परमिशन चेंज हो गला तो नेक्स्ट हमें कौन करिया ना ताकू गोटे सिंबॉलिक लिंक गोटे क्रिएट करिवा राइट गोटे सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करिवा सिंबॉलिक लिंक रे काम कोन होची तो एठी कोन होची ना हमर फाइल ता अछि कोन यूजर लोकल बिन बट हम जदी यूजर बिन भीतर रखिबा त तार काम गना ऑल ओवर नहीं तुम जोटी भी जाओ जो पाथ को भी जाओ जोटी भी चाहे तुम डॉकर कंपोज टा एग्जीक्यूट करि पारिबो तो यूजर बिन हला तमरो सिस्टम रो जोड़ा यूजर रिलेटेड बाइनरी डायरेक्टरी यूजर बाइनरी डायरेक्टरी जोटा कि सब बाइनरी फाइल्स तो मुझे तो जो जगह रे चाहिए बर्तमान मु एटी की इसी टू यूजर रे रहिली जेहेतु मैं ऑलरेडी सिंबॉलिक लिंक गोटे क्रिएट कर देछि एटी ऐड कर देछि तो मु एटी जदी डॉकर कंपोज एबे एग्जीक्यूट करी राइट डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन वर्जन sorry spelling English hyphen version hyphen गोटे hyphen छाड़ी देली hyphen version तो एबे हम देखला docker version तो मु जो डायरेक्टली चाहिले भी docker मु compose टा execute docker compose रो कमांड केमती ना docker hyphen compose that's all what we are going to do we are going to create the docker compose that YAML file okay and how we'll write this YAML file let me just explain you okay so तुम जदि मो गिटहब अकाउंट को जीव से तुम बहुत सारा प्रोजेक्ट पाइबो डॉकर कंपोज ऊपर बट स्पेसिफिकली आई वुड से लाइक गो विथ डॉकर पीएचपी अपाची माइस्क्ल गोटे प्रोजेक्ट अच्छी रेपोजिटरी तो सही प्रोजेक्ट को तुम तुम फोर्क करके तुम अकाउंट रे ऐड कर दियो बा तुम सेमती जीव भी डॉकर कंपोज ऊपर भी वर्डप्रेस ऊपर भी गोटे स्मॉल सेम एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट गोटे बनाइछि okay in 2024 it was created so docker compose and also docker php apache what a project अछि okay multiple projects भी अछि docker compose परे but ए दुइटा तमे जो recently बनायता ता पर तमे just तम account को fork करिवो आ तादरे काम करिवो right let me just explain you what this particular project is and how it is being created okay so आमे केमती करिवा ना the first thing hela tame eta ko just tame jodi use karucho konis linux machines but definitely git is the first tool you have to install in your machine right tame jaha bhi kam karucho git is the must to mu git install kari mera clone kari dechi particular to jodi sei particular folder bhitor ko jibi right let me increase the font so eti kon achi na basically gote देखो YAML फाइल रोची तो हमें डॉकर कंपोज तो जेमती हमें डॉकर फाइल गोटे लिखुतले राइट तो डॉकर फाइल लिखुतले हम कम गोटे डॉकर फाइल लिखले तार डीटा कैप्स रे लिखुतले राइट अपर केस एंड डॉकर फाइल सो जहाँ भी इंस्ट्रक्शन सब थिला हम से डॉकर फाइल रखले सेटा भी हमें एग्जीक्यूट डिफॉल्ट फाइल है डॉकर फाइल में एग्जीक्यूट करतले सेमती डॉकर कंपोज रे हमें केमती लिखबा docker-compose.yml docker-compose.yml so automatically docker compose ta kon karibo ta sei particular file ru read karibo jemti ki ame dekhitele se besi kichi commands nahi kon command achi only docker-compose so docker-compose hochi docker compose ro command right ta saito options tame use karibo op to create or start the container तो last class ame already buchiche right so similarly तमे जदि किछि माने डॉकर कंपोज ऑफ हाइफेन डी ऑप्शंस तमे जदि चाहूचो ताकू डिटैच मोड रे बा बैकएंड रे रन करिबा पे देन यू कैन गो विथ दिस हाइफेन डी ऑप्शन राइट एंड सिमिलरली तमे जदि कंपोज माने यूज करी कि किछि मल्टी कंटेनर रन करिचो ताकू डाउन करिबा पे राइट माने रिमूव करिबा पे स्टॉप करिबा पे यू कैन यूज डॉकर कंपोज डाउन okay so what will happen docker compose down it will stop and delete the container first it will stop and delete the but sometimes what you want to stop the services only right so what are the so here another thing guys man rakho eti ame container no koi ki services ko a jaye right eti ko je services tame as a service ba container service hisab ame create kariya but actually container right तो जदि ame जो भी सर्विस रन होची ताको हम स्टॉप करिवा बा कंटेनर को स्टॉप करिवा देन वी कैन गो विथ डॉकर कंपोज स्टॉप
तो जब हमें डाउन करिया मन रख से कौन करियो ना स्टॉप करके डिलीट कर दो राइट आ तार कमांड अच्छे आपण डॉकर कंपोज स्टॉप कल तापर स्टार्ट करिया चाहूछ स्टार्ट करि परिबो ओके तो एटा हला तार वेरी मिनिमम ओनली 4-5 कमांड्स राइट बेसी तुम कष्ट होबनी मने रखिबा पई राइट तो आमे कोन करिया वर्तमान डॉकर कंपोज ऑफ करी यूज करिया बट आमे तो डॉकर कंपोज ऑफ एटी आमे कोन किछि फाइल पास करूने राइट त माने कोन होछि ना आमे जो फॉर्मेट रे फाइल लिखिबा docker -compose.yml फाइल सो yml syntax guys you should know right already आमे yml फाइल रे बहुत किछि कोन Ansible playbooks लिखि सारी छी राइट ऑलरेडी काम करि सारी छी तो YAML तुमको एते कष्ट भी हबनी लिखिबा पई तो एटी केमती आमे लिखिबा YAML फाइल रे let me explain you what is written here तो मु जदी एटा ओपन करिवि ओके तो एटी बहुत सारा फाइल तळु तळु अछि तो एक्सप्लेन करिया बेटर हबो मु तुमको एटी एक्सप्लेन कर दोछि docker compose.yml ओके सो देखो फर्स्ट थिंग हैला टी मु जेमदी कहली वर्जन सब यूज होची राइट वर्जन्स सब यूज होची तो जो जहां भी वर्जन्स यूज होची 2 ता माने कोन हला ना आमे जो डॉकर कंपोज फर्स्ट आमे जानि छी जेतोले हमर YAML फाइल लिखिबा राइट लेट मी एक्सप्लेन हियर जेतोले YAML फाइल गोटे लिखिबा तो 3 डैशेस थ्रू स्टार्ट करूचे if you're not giving it's okay but basically whenever you are writing any YAML syntax right it starts with 3 dashes version देइचे जोटा version रोची right version 2 बा 3 ए जो version ता हला तमरो कोन docker compose रो को version docker compose तमे यूज करबा को चाहौ छ राइट तो सही हिसाब रे तमे जदी docker compose रो पर्टिकुलर फाइल को जिबो बा docker compose रो how you can use the docker compose right तमे जे कंप्लीट देखिबो तो एठी तमे पाइजिबो केमती कोन वर्जन्स तमे यूज करू छ ओके सो you can just see how docker compose works already अछि right compose.yml रे तो आमे जदी एठी के जिबा the compose file okay cli see ए जो कमांड सब बतन बुझेली से कमांड सब डिटेल्स अछि राइट देखो ए सर्विसेज तार कंप्लीट डिटेल्स अछि केमती कोन तमे सर्विसेज तमे यूज करिवो राइट कंप्लीट डिटेल्स सर्विसेज अछि राइट तबे से हम धीरे धीरे बुझिबा बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द फाइल हियर सो द docker versions हम को वर्जन docker compose यूज करिबा देन सर्विसेज राइट व्हाट इज द सर्विस सो जेमती कहली हमें जहां भी यूज करिबाटी आको कोन docker compose रे ako में कोन सर्विस हिसाब रे करबा तो तीनटा सर्विस मटी क्रिएट करछि कोन तीनटा सर्विस ना गोटे देछि www गोटे सर्विस जोटे कि हमरो नथिंग बट द फ्रंट एंड राइट द UI पार्ट we have given as www and then I've given as the db as another service so db आ गोटे सर्विस देछि जोतरे कि मु डेटाबेस रिलेटेड कंटेनर the first container मोर कोन होबो ना UI container right front end container गोटे container गोटे service another db service रे आ गोटे container रखिछि तब एठी आ गोटे database UI एटा ओके database front end database access करबा एटा ला database रो backend installation sta होछि right बा container create हबो एटा ला database front end container php myadmin ओके तो एठी भी आ गोटे हम container तो तीनटा container create करी गोटे फाइल रे सिंगल फाइल रे we are going to create multiple containers and we are going to manage them also not individually but at a time we are going to manage all the containers okay let me first explain you the first jabi hame command use karuchi w right first hame rakhiche build ta mane to build something right hame jemti docker build use karikri kichi docker file le image create करतले तो एठी कोन करछि ना से ए पर्टिकुलर सर्विस रे फर्स्ट बिल्ड करछि कोन बिल्ड करछि मथि डॉट देछि माने करंट डायरेक्टरी रे बा करंट कॉन्टेक्स्ट रे जहां भी डॉकर फाइल अछि सेटा से बिल्ड करिवो राइट तो हमर एठी कोन डॉकर फाइल अछि फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू देखो एट गोटे डॉकर फाइल अछि बुझना नै कोन से करंट कॉन्टेक्स्ट में हम डॉट देइतली तो करंट कॉन्टेक्स्ट रे गोटे डॉकर फाइल अछि
So simple docker a docker file टा बेसी complicated नहीं, just simple docker file देखो। तो ये docker file रे कौन अछि just दुईटा instructions अछि गोटे हला base image आमे कौन 7.2 apache आनुचे okay php apache 7.2 and install mysql I install करा अछि जेतो एटा हमर database सहित आमे interact करिबा राइट। तो सेति पय से कोन mysql रो एक गोटे एक्सटेंशन इंस्टॉल करूची राइट mysql I इंस्टॉल करूची गोटे पैकेज होता ना गोटे कंटेनर जस्ट गोटे इमेज क्रिएट करिवो राइट। तापर आमे कोन करछ ना सही इमेज एटी गोटे इमेज क्रिएट हला आमे एठी कोन करछ ना इमेज क्रिएट करूचे सही इमेज रु आमे कंटेनर क्रिएट करूचे राइट। फर्स्ट सर्विस रे बतौची सेकंड सर्विस रे आमे ऑलरेडी इमेज पुल करूचे कोडू docker hub ru and then दुईटा वे रे मु तुमको बतै दोची गोटे केमे तमे docker build करिगिरी इमेज क्रिएट करिवो तापरे कंटेनर क्रिएट करिवो एठी केमती ऑलरेडी इमेज आनिकरी कंटेनर क्रिएट करिवो ओके। तापरे एठी हमें जानि छे एठी पोर्ट्स जेमती हमें पब्लिश देखितले कोन सिंगल कंटेनर क्रिएट कर -p ऑप्शन पोर्ट देतले तो एठी कोन करिवो हमें पोर्ट्स जो टारगेट दो पोर्ट्स तासे तो हमर कंटेनर पोर्ट होस्ट पोर्ट आउ कंटेनर पोर्ट मुदेली 80 अपाचे हम जानि छे डिफॉल्ट हला 80 तो 80 देली तो एटा गोटे लिस्ट हिसाब रे काम करछ ओके। तापर वॉल्यूम्स हमें सेठी हमें वॉल्यूम्स देखितले केमती वॉल्यूम्स क्रिएट करी अटैच करतले तो एटी भी सेमती मु वॉल्यूम्स गोटे दउची जोठी की कोन www जोटा गोटे फोल्डर टा एटी कोन गोटे डायरेक्टरी को जस्ट अटैच करूची बा www.html जोटा की होम डायरेक्टरी of the Apache server root directory को मु कोन वॉल्यूम टा मैप कर दोची लिंक्स तापर गोटे अछि ऑप्शंस जोटा कि लिंक्स मु कोन करछि -db तो डेटाबेस को मु कोन करछि ना एटी लिंक करूछि राइट। तो ए जो लिंक करूछि एटी देखो ए कंटेनर वर्तमान लिंक हे गला ए ऑप्शंस टा हमें कोन जानथले docker रे सिंगल कंटेनर तो लिंक करिबा -link ऑप्शन राइट। एठी सेम लिंक एठी हम यूज करछे लिंक्स -db ए जो सर्विस टा हमें अछि db सर्विस एठी मु लिंक कर देली तान वर्तमान हमर फ्रंट एंड कंटेनर विल गेट लिंक्ड टू द डेटाबेस कंटेनर ओके। तापर नेटवर्क्स डिफॉल्ट नेटवर्क सो व्हाट इज द डिफॉल्ट नेटवर्क इट विल बी द ब्रिज नेटवर्क राइट द डिफॉल्ट नेटवर्क राइट रखि देली देन सेमती आउ गोटे सर्विस आउ गोटे कंटेनर मु क्रिएट करबी तो एटा हमें db तमे जानि तो YAML फाइल केमती लिखियो राइट हाउ वी कैन राइट द YAML फाइल्स तो जहाँ भी YAML फाइल्स लिखो जेहेतु YAML follows the Python syntaxes right so indentations is must right you have to be very careful about the indentation right so indentation it should be whenever you are creating db colon space then जहाँ भी जेमती अछि इंडेंटा से हिसाब रे तमे रखियो ओके। so the image मोइटी कोन हला पर्टिकुलर इमेज यूज करछि mysql इमेज ता देन एटी पोर्ट्स तमे डेटाबेस रो कोन हला mysql जतले पोर्ट यूज करबो डिफॉल्ट पोर्ट हला 3306 तमे एटी डिफॉल्ट पोर्ट यूज कली 3306 तापरे मोटे किछि एनवायरनमेंट ऐड करूची जोटा कि मु एनवायरनमेंट वेरिएबल्स राइट ठीक पास करूची राइट एनवायरनमेंट वेरिएबल कोन पास करूची ना mysql_database जोटा कि डेटाबेस ना राइट मेडी देछि MyDB तमरो कंपनी रिक्वायरमेंट हिसाब रे तम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हिसाब रे तम एठी जा भी दे पाइबो मेडी MyDB जस्ट गोटे सिंपल लिखि देछि राइट। सेमती तमे जदी किछि अलगा किछि माने ऐड करूछो राइट लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड ना गोटे दोछो देन तमे दे पारिबो तापर यूजर पासवर्ड सिंपल राइट यूजर पासवर्ड मु दे देली सब सेम रखि देछि आ गोटे कथा हला ना कोन एठी जहां भी हम यूज करछे इट्स अ टेक्स्ट फॉर्मेट सो इट इज इजीली विजिबल टू द आईज राइट एवरीवन कैन रीड इट बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू डू राइट वी शुड हाइड द पासवर्ड राइट। तो मु नेक्स्ट बते देबी तुम के पासवर्ड को हाइड कर परबो एनक्रिप्टेड करिकरी दे परिबो राइट। वर्तमान हम देखिथिबा mysql_user
Ranjit underscore password Ranjit and underscore root underscore password also Ranjit. तो এটা হলা database র পাসওয়ার্ড যে root পাসওয়ার্ড আমি ইউজ করছি অলরেডি রাইট চেঞ্জ করে আমরা চেঞ্জ করে দଉଛି তারপরে এটি ভলিউমস আমি ইউজ করছি গোটে ডম্প নেইছি রাইট সেটাକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା add କରିକିରି docker entry point init db.d এটা হলা গোটে daemon directory ओके daemon directory जो dump folder गोटे अछि एटी देखो गोटे www फोल्डर गोटे आ गोटे dump folder ए दुईटा विषय में बुझे देब dump folder कोन अछि www folder कोन अछि ना एप्लीकेशन अछि जो एप्लीकेशन ता हमें लिंक करछे apache रो एप्लीकेशन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी जो टिक हमर एप्लीकेशन रन हबो राइट सिमिलरली एटी मु dump डायरेक्टरी कोन करछि ना जोटा गोटे daemon बा एंट्री पॉइंट डायरेक्टरी रे स्टोर करछि जोटा कि गोटे सिस्टम स्टार्ट हला परे बा कंटेनर स्टार्ट हला daemon ऑटोमेटिकली ए dump फोल्डर रे जहा भी थिबो ताकू रन करिवो तो एठी कोन अछि dump फोल्डर रे रखिछि ना कोन SQL क्वेरी सब रखाइछि ओके से SQL क्वेरी भी सब तुम देखेबी तापर एठी मु persistent volume गोटे क्रिएट करछि ना हला persistent तो persistent volume जो क्रिएट करछि ता नाटा ही मु persistent देछि तो ए var leave mysql एगरा गोटे वॉल्यूम जो var leave mysql माने एटा कंटेनर जो पाथ ता राइट mysql पाथ जो टी सब जगह लॉग आ फाइल सब स्टोर हो राइट तो एठी कंप्लीट तको मु गोटे पर्सिस्टेंट तो ता माने कोन हैला ना मु एठी कोन वॉल्यूम्स क्रिएट करली दुईटा गोटे हैला डंप रे डंप करिकरी डंप फोल्डर डायरेक्टरी को मैप कर दोची एसे आ गोटे हैला मु पर्सिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करची आ तापर एठी को अटैच करची नेटवर्क डिफॉल्ट राइट सिंपल नेक्स्ट सर्विस रे हमें कौन यूज करछे नेक्स्ट सर्विस रे हमें कौन करछे ना php my admin php my admin एठी जेमते हमें इमेज यूज करथले एठी सेमते इमेज यूज करछे तापर लिंक्स करछे डेटाबेस को एठी पोर्ट्स हमें यूज करछे 82 होस्ट पोर्ट कोन दले 82 कंटेनर पोर्ट हला 80 रिमेंबर हमरो Apache server default port है 80 similarly php my admin जो एप्लीकेशन टा तार भी डिफॉल्ट पोर्ट है कौन 80 जेतु हमें दीटा सेम पोर्ट रो कंटेनर क्रिएट करि परिबानी राइट केमती ऑलरेडी गोटे सेम पोर्ट रो हम गोटे पोर्ट को ऑलरेडी होस्ट पोर्ट को 80 को कनेक्ट करिचे तो 80 को ऑलरेडी कनेक्ट छु ना अनदर पोर्ट वी कैन नॉट कनेक्ट एज 80 सो मु कोन कली ना 82 कर देली आ गोटे पोर्ट 82 तो माने दीटा कंटेनर हम सेपरेट रन हबो से गोटे कंटेनर गोटे रन ये गोटे कंटेनर तो जेतु इटा गोटे कोन डेटाबेस रो UI एप्लीकेशन टा राइट php my admin तो ताको हमें डेटाबेस को कनेक्ट करिवा पई ए डेटाबेस को कनेक्ट करिवा पई कंटेनर को कनेक्ट करिवा पई तो मतलब कोन दरकार ना यूजर आईडी और पासवर्ड तो mysql यूजर दरकार आ mysql रो पासवर्ड दरकार तो जहा एटी हम यूज करतले तो सही कंप्लीट डिटेल्स हम यूज करिवा कनेक्ट करिवा पई तो मु देखे देबी तो एप्लीकेशन रन हो ओके तापर हमें जो वॉल्यूम्स टा यूज करछे पर्सिस्टेंट एटी क्रिएट लिंक करिचे राइट ऐड करिचे तो हम वॉल्यूम्स क्रिएट करछि कोन पर्सिस्टेंट त ना दले हमें पर्सिस्टेंट ओके एतिके सिंपल पूरा सिंपल अछि राइट तापर से वर्डप्रेस टा भी तमे निजे निजे देखि कि करबो तापर हम एटा जस्ट लेट मी कम आउट बुझी पालो डॉकर कंपोज जहां भी टाइप करे अछि डॉकर कंपोज YAML भीतर हम रख देले तो जो देखोतली दुईटा फोल्डर www और dump लेट्स गो इनसाइड तो www गोटे कोन जस्ट गोटे एप्लीकेशंस ता भीतर अछि index.html आ किछि नै ता भीतर गोटे index.php जेटु गोटे php एप्लीकेशन ता राइट तो मी index.php जोटा कि हमर एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन एटा हमर स्टोर हे कि रहिछि राइट तारपरे गोटे डम्प फोल्डर अछि तो डम्प फोल्डर में कोन रखिछि ना गोटे SQL स्टेटमेंट बा SQL सिंटैक्स अछि जोटा कि SQL dump फाइल अछि राइट से dump फाइल ता मते कोन देखो mydb.sql एटा ला गोटे dump फाइल ता तो ई जो फाइल रे कोन अछि ना गोटे किछि इंसर्ट mysql रो डेटाबेस रो क्वेरी किछि अछि ओके डेटाबेस रो स्टेटमेंट अछि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट आ गोटे ला इंसर्ट स्टेटमेंट क्रिएट टेबल आ गोटे ला इंसर्ट त माने कोन ला जतो बळे एटा mydb.sql ता कोन ला कॉपी जो कोटी की ना एंट्री पॉइंट कंटेनर रो एंट्री पॉइंट को तो कॉपी हो जाउची डेमन डायरेक्टरी को ऑटोमेटिकली ए फाइल टा एग्जीक्यूट हे जिवो
कि करिवो कंटेनर जेतले क्रिएट हबो तो एटा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हबो और से कोन करिवो ना हम पई गोटे पर्सन टेबल गोटे क्रिएट करिवो आ तापरे ए सब डेटा कोन इंसर्ट करिवो insert into person table so data column nechi id ଆଉ name okay simple right तो हमरो compose file everything we have written so तुम बुझे देली कौन सब अच्छी बहुत बेसिक जिनस टाइप रो अच्छी डॉकर कंपोज रे तमे आर टू कॉम्प्लिकेटेड तमे वंस बेसिक बुझी पले आर टू कॉम्प्लिकेटेड डॉकर कंपोज रो एप्लीकेशंस मल्टी कंटेनर्स तुम बनै परिबो इजीली okay so now let me go through and explain you about the executions how we can execute then हमें कौन करिबा कनेक्ट करी देखिबा एप्लीकेशंस को केमती कनेक्ट करिबा आ एक्सेस करिबा राइट बा कंटेनर को केमती एक्सेस करिबा सो जेमती कहली कोन हमें कौन यूज करिबा docker compose एटा हमर कमांड राइट docker compose हला कमांड जदि वर्जन चेक करे पे चाहू छ versions मध्ये मारी docker compose -v then docker compose versions 2.39 installation okay perfect now को कौन करिए हमें docker compose एटाला कमांड तबरे ऑप मारीबी ऑप माले कोन हो ना सब जगह कंटेनर को से स्टार्ट करियो एठी ऑफ माले एठी कोन अटैच हेकी टर्मिनल को रहबो तो डिटैच मोड करे पे मु -d ऑप्शंस मार दे ओके हिट एंटर ओके तो एठी कोन हैला ना परमिशन डिनाइड राइट तो एठी मु कोन करछि ना नॉर्मल यूजर हिसाब रे कोन ec2 यूजर रे करछि बट this should be executed as root user right so let me change myself to root docker compose of -d सी तो धीरे धीरे कौन कला php my admin इंस्टॉल करछि तापरे db धीरे धीरे कोन द इमेज सब पुल करिवो राइट इमेज पुल करिकरी ताको जा इंस्ट्रक्शंस हमें लिखि जे से कोन कंटेनर क्रिएट करिवो राइट एटी कोन करना हमें तीनटा सेपरेट गोटे कंटेनर कलेनी तो सीधा डॉकर कंपोज YAML रे लिखि देगिरी कोन यूज कर देले डॉकर कंपोज ऑफ से सब रन कर देला ओके कोन हला क्रिएटेड राइट आउ गोटे एटी देखि दियो म तुम कहबा को भूली गली तो मु ऐड भी कर देछि ये जो वर्जन हम यूज करने की आउ वर्जन्स यूज होउनी एक्चुअली ओके हमें जेतले कोड देखिले राइट डॉकर कंपोज एटी से कोन वर्जन यूज करूनी एबे कोन कोछि ना डॉकर कंपोज ऑटोमेटिकली टेक्स द वर्जन ऑटोमेटिकली वर्जन से नहीं जाउछि तो एटी से कोन देखुछि ना वर्जन ता ऑब्सोलेट हे गेलानी ओके तो हम यूज करिया किछि दरकारी नाही यूज करछि किछि प्रॉब्लम नाही बट वी शुड नॉट यूज इट गोइंग फॉरवर्ड माने रखिता ओके तो नेक्स्ट ईयर ताउटा रिमूव करी हमें देखि देबी तुमको तो वर्तमान कोन हला कंप्लीट कंटेनर देखो सब जगह केतरा कंटेनर क्रिएट हला फर्स्ट कोन क्रिएट हला देखो नेटवर्क क्रिएट हे गला वॉल्यूम क्रिएट हे गला कंटेनर तीनटा कंटेनर क्रिएट हला राइट ओके नाउ हमें जहां भी कंटेनर क्रिएट कले राइट तो हम कंटेनर चेक करबा पे कोन कमांड यूज कर परिबी कि कहबो docker container say docker command हम यूज करबा ओके we are going to use the docker command so docker container ls देखो केतरा कंटेनर तीनटा कंटेनर रन हैला मु खाली जस्ट docker compose ऑफ मारिली तीनटा कंटेनर अबाउट ए मिनिट गो सब जगह ऑफ है कि रन होची सब जगह रन होची राइट तो हमें जो कंटेनर रन हैला कोन हमर दुईटा एप्लीकेशन अछि गुटे डेटाबेस अछि कंटेनर एटा हमर डेटाबेस कंटेनर आ ओइ दीटा हला हमर कोन एप्लीकेशन कंटेनर राइट तो हमें एप्लीकेशन को चेक करबा पई मु जदी कोन आईपी एड्रेस नउची सर्वर
देख हमर कंटेनर एप्लिकेशन रन हेगला तो ये कौन अच्छी रंजीत राकेश दिनेश कार्तिक राइट सो आईडी हिसाब तो ये सब क्रिएट केमती है एप्लिकेशन हमर रन हेगला राइट दिस इज डॉकर कंपोज क्लास एंड जहाँ भी ये सब कौन ये जो डाटा कोठ आणुची डेटाबेस राइट ये सब डाटा कोठ आणला ना डेटाबेस रु आणला राइट तो मुझे जब चाहूँ डेटाबेस रे कौन ओके लेट मी शो यू इन ए डिफरेंट वे यहाँ गोटे आम कौन मुझे एप्लिकेशन को डायरेक्ट कनेक्ट कली आम आउ गोटे आम कंटेनर रन होची राइट जोटा कि पीएचपी माई एडमिन तो ये एप्लिकेशन को रन कंटेनर केमती कनेक्ट करी ना कौन वेब एप्लिकेशन पीएचपी माई एडमिन रन होची पोर्ट 82 रे राइट मु कौन करी बर्तमान सही आईपी एड्रेस बट कोलन 82 देखो PHP my admin welcome to तो यूजर नेम कौन थिला हमरो रंजीत राइट पासवर्ड भी रंजीत थिला सी कौन दुईटा कंटेनर को मुझे वर्तमान कनेक्ट कर देली गोटे कनेक्ट कंटेनर जोटा हमर एप्लिकेशंस जोटा रन होचे आ गोटा यू जोटा कि हमर डेटाबेस एप्लिकेशंस ता राइट तो एथिरे माई डीबी देखो जो हमर डेटाबेस ता हमें कौन क्रिएट करथिले बा ना देथिले कोडी YAML फाइल राइट तो सेटा हमर क्रिएट हेछि वर्तमान ए डीबी रे पर्सन्स गोटे टेबल ना राइट देखो पर्सन्स रे जदि हम क्लिक करूछि आईडी ना सब क्रिएट हो जाउछि बुझि परलो राइट केमती कंप्लीट काम करछि ओके नाउ लेट मी गो थ्रू एंड terminate everything and create again freshly with some changes okay तो आमे कौन कले जतबे कंपोज यूज करी कि कंटेनर्स क्रिएट कले तो सेता आमे देखले किछि नेटवर्क बा जो हमर वॉल्यूम राइट परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हेछि राइट तो ता पूर्व मु कौन करछि ना तम कंटेनर सब अछि कंटेनर को मु कौन करबी कंप्लीटली डिलीट कर दोछि तो मु कौन कर परबी ना docker-compose इटी कौन मरिबी डाउन तो सी एटी कौन करबो ना स्टॉप आउ डिलीट करिवो सब जगह राइट लेट्स सी देखो स्टॉपिंग स्टॉप सला पर रिमूव दे गेला ता सहित से कौन जो नेटवर्क गोटे क्रिएट करथिला डिफॉल्ट नेटवर्क से नेटवर्क भी रिमूव हो गेला एटी क्लियरली गाइस देखो राइट कौन कला से कंटेनर को रिमूव कला नेटवर्क को रिमूव कला बट वॉल्यूम रिमूव हेलानी कहीं की रिमूव हेलानी मते को तुम ऑलरेडी जानिଛ एटा गोटे फीचर डॉकर रो बहुत इंपोर्टेंट फीचर तमरो वॉल्यूम टा डिलीट हेलानी कम पाई हमें परसिस्टेंट करथिले राइट persistent volume रो काम कोन what is the usage of the persistent volume to preserve the container data जदि कंटेनर्स एक्सीडेंटली डिलीट हो गला टर्मिनेट हो गला राइट जेमति मु एबे रिमूव कर देली कंटेनर तो से डेटा जदि मते दरकार फ्यूचर पई तो सेति पई तो डाटा स्टोर हेकि रहउची ना परसिस्ट हेकि रहउची ना डाटा तो डाटा जदि persistent वॉल्यूम की जदि डिलीट कर दो देन व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट तो तार जो फीचर्स तार किसी फायदा होबनी राइट तो जतो हमें डॉकर कंपोज डाउन करूचे से वॉल्यूम छड़ा बाकी सब सर्विस बाकी छड़ा जहाँ क्रिएट करथिबो सब को कोन रिमूव कर दूछ बट हमरो वॉल्यूम विल बी स्टिल देयर ओके तबे देखि दबा कंटेनर हमर अछि ना नाही देखो किछि कंटेनर नाही हाइफन ए देले भी किछि कंटेनर हम नाही सब जक कोन रिमूव हे गला तो बट हम यदि वॉल्यूम चेक करबी डॉकर volume ls see a particular volume amar achi a particular volume amar achi right तो ये वॉल्यूम जदि वॉल्यूम पाथ को हमें जम ये वॉल्यूम रो पाथ जानि केते वॉल्यूम नाटा तो अछि के मते कहबो वॉल्यूम रो पाथ मु केमति जानिबी डॉकर क्लास रे हमें पढी दिले राइट जल्दी को गाइस वॉल्यूम रो पाथ केमति मु जानिबी we can use
docker volume inspection, right? inspect guys तुम सब practice न कले किछि भी मन रहिबनी, right? practice करो inspect volume तो inspect कले कोन होछि ना volume जतो हम inspect करूचे कोन अछि mount point गोटे पाउचे, right? तो ई mount point रे हमर डेटा जहां भी हमें कोन var leave mysql माने अछि हमर कोन compose फाइल रे हमें देइतिले, right? सेटा को वॉल्यूम सहित हमें ऐड करथिले तो जहां भी mysql फोल्डर रे जहां भी डेटा थिबो सब जगह कोन ए पर्टिकुलर पाथ रे स्टोर हेकी रहिथिबो, राइट? लेट्स गो टू दिस पाथ जदि cd से पाथ को जिबी सी ई सब जगह कंटेनर डाटा डेटाबेस रो जहां भी कंटेनर देखो माइंडडीबी जो हमें क्रिएट करथले डेटाबेस, राइट? से डेटाबेस ता भी अछि तार टेबल भी थिबो तार कंटेंट सब ता भीतर थिबो, राइट? एंटायर कोन डेटाबेस दैट mysql रे जहां भी थले सब जगह बैकअप नै के एटी अछि हमर कंटेनर आउ नाही कंटेनर डिलीट हे गला बट स्टिल द डेटास आर प्रिजर्व्ड, डेटास आर अवेलेबल, ओके? तो मैं जदि mysql आ भितर को जिबी लेट्स गो टू दिस so we'll find the person table, right? टेबल नाम में कौन थिला पर्सन क्रिएट करथले एटा तार डेटाबेस फॉर्मेट हिसाब रे तार फाइल से क्रिएट करछि, ओके? नाउ लेट्स गो देयर and do some changes to the file, right? तुम कौन करबी home user cd docker तो बुझी पारलो, ओके ओके आउ थरे एग्जीक्यूट करबा पूर्व हमें कौन करबा से वॉल्यूम टा को हमें डिलीट कर दवा बर्तन, ओके? जदि हमें वॉल्यूम को डिलीट न करूचे कौन हबो ना सेम हमें आउ थरे एग्जीक्यूट करबा कौन हबो ना से डेटा जहां भी अवेलेबल थिबो से कंटेनर रे रिफ्लेक्ट हे जिवो तो हमरो हमें जहां करबा को चाहछे एटा किछ हमें पाई परिबानी, राइट? तो बेटर विल क्लीन अप द वॉल्यूम्स नाउ, ओके? तो वॉल्यूम को हम डिलीट कर दोची जेतो हमरा डेमो में दरकार नहीं वॉल्यूम को हम डिलीट कर दोची तो कौन कमांड यूज करबा हमें docker volume rm और कौन होइला डिलीट, राइट? जदि तुम कंफ्यूज हो कौन करबो हेल्प एटी डिलीट यूज होची rm यूज होची, ओके? सो docker volume rm और वॉल्यूम ना, राइट? कौन वॉल्यूम नाटा कौन थिला, ओके? वॉल्यूम नाटा भूली गले वॉल्यूम ls इटाला वॉल्यूम बट बिट अछि, राइट? तुम कौन करबे docker volume rm, ओके? वॉल्यूम हमर डिलीट हे गला एवरीथिंग क्लीन्ड नाउ, राइट? लेट्स गो एंड do some changes मैं एटी कौन को हमें देखले जे वर्जन सा ऑब्सोलेट हे जायछि तो हमर ये वर्जन सा किछि दरकार नै तो मैं आपको डिलीट कर देली, फाइन, राइट? गोटे चेंजेस कली एथिरे आ गोटे चेंजेस मैं कौन करछि हमर जो डम फोल्डर रे, राइट? जो डम फोल्डर टा आ भितरे सॉरी एटा cd डम फोल्डर भितर जिबी आ भितर जो एम एसक्यूएल फाइल अछि मैं टिके मॉडिफाई करूछि, राइट? माइंडडीबी एसक्यूएल, ओके? सो एटी जस्ट ना चेंजेस कर दोछि किछिटा सपोज I'll give us Swaroop, Devenu, and Rupa. I would have my ID add couple check. Should I get so was 5, okay? Then तो मु नुवा किछि मॉडिफाई कर देली कोथरे मोर जो एसक्यूएल डम फाइल अछि बा एसक्यूएल स्टेटमेंट रे किछि चेंजेस करते जोटा कि हमें हम हिसाब रे हमें कोड रखिछे हमें जदि सेटा को देखिबा docker compose फाइल रे, राइट? सेटा को रखिछे ना ए पर्टिकुलर
एंट्री पॉइंट रे हमें ऐड करछे जोटा कि हमर डेमन डायरेक्टरी ओके डेमन डायरेक्टरी ए एंट्री पॉइंट रे हमें ए डायरेक्टरी भितरे जहा भी रहियो सेटा कंटेनर बा सर्वर क्रिएशन बेले सेटा स्टार्ट हबो राइट एग्जीक्यूशन सब तो हमर ए जो डंप डायरेक्टरी रे हमें कोन करछे वॉल्यूम्स रे आकु लिंक कर देछे बा मैप करिछे राइट तो ए डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली कोन हबो ना एटा मैप हे जाउछे टिकी तो जहाँ भी डाटा रहा अवेलेबल ये ऑटोमेटिकली एक्जिक्यूट तो आमर से एसक्यूएल फाइल टा कौन हम ऑटोमेटिकली रन हो जाउची सेही तो आमर कौन टेबल क्रिएट होउची आ डाटा इंसर्ट हो जाउची टेबल रे राइट देन तो मैं बे चेंजेस किछि करथिली लेट्स एक्जिक्यूट इट द डॉकर हाइफेन कंपोज ऑफ हाइफेन टी ओके सो इमीडिएटली देखो ये क्रिएट कर देला राइट नेटवर्क क्रिएट कला वॉल्यूम क्रिएट कला कंटेनर स्टार्ट हो गला राइट तो एबे आमे जाई करी ये जो एप्लीकेशंस अछि राइट लास्ट टाइम जेतले मु एटा करतली राइट एटा हमें करतले ये पुराना डाटा थिला बर्तन हमें डाटा चेंज कर दै छै राइट सी we got new container with new data application has changed so ये data actually से आणुची कोठू ना database रु backend रे connect करी कि database रे हम कोन गोटे database container अछि राइट तो database container रु से कोन करछि ना डाटा को फेच करूछि तो मु ए जो एठी देखो एठी भी पुराना अछि माको रिफ्रेश करछि एबे फोन थरे लॉगिन मागी बसे जेतु हमर नुवा कंटेनर क्रिएट हला राइट तो हम लॉगिन करछि आउथरे डन देखो चेंज हो राइट जेतु एटा गोटे पीएचपी माई एडमिन हैला गोटे कोन डेटाबेस क्लाइंट ता गोटे राइट तो डेटाबेस यूआई फॉर्मेट जोटे कि मु चाहिए ये कोन डेटाबेस को कनेक्ट हेछि मु चाहूछि ए जो डिटेल्स अछि सपोज मु चेंज करबा को चाहूछि राइट तो मु जदी एठी मॉडिफाई किछि करी दोछि राइट सपोज आई एम गोइंग टू मॉडिफाई समथिंग right so select start from persons ये सब डाटा जे जानी थिबो राइट तो मोटी ऑपरेशंस से किछ नहीं स्ट्रक्चर भी किछ नहीं ब्राउज ओके सपोज मु एठी मॉडिफाई करबा को चाहूची ओके आ गोटे ऐड करी आ गोटे आईडी ऐड करबा पे चाहूची बा सपोज ओके सो 5 अछि राइट सो बस मु 6 आ गोटे ऐड करबा पे चाहूची तो एठी मु कोन करबी हमें कोन इंसर्ट स्टेटमेंट लिखिबा राइट इंसर्ट स्टेटमेंट रे एठी यूज करछि इंसर्ट इनटू पर्सन आईडी नेम वैल्यूज सपोज मु वैल्यूज एठी देली कोन 6 देन suppose Anupam right insert into person अलग टेबल एटा कोन एसक्यूएल स्टेटमेंट गोटे जे डेटाबेस पर जे जानि काम करछि इजीली जानि परिबो एटा तो मु कोन करला ए क्लाइंट यूज करी एटा गोटे कंटेनर राइट पीएचपी माई एडमिन एटा गोटे कंटेनर रन होछि तो मु एटा सो गोटे नुवा डाटा नुवा रो इंसर्ट हे गला राइट तो मु जे हम एप्लीकेशंस को जिबा ए एप्लीकेशंस को जिबा राइट अब एठी मु रिफ्रेश करछि देखो आड़े गला राइट एटा में देखि लेबे केमती डेटाबेस गोटे कंटेनर जोटा बैकएंड रे रन होची आ दीटा एप्लीकेशंस हमें कनेक्ट करिके तो सही हिसाब रे तमर टास्क हैला तो आज डॉकर कंपोज पूरा कंप्लीट सॉरी गला तो डॉकर कंपोज तमे फॉलो करिके डॉकर कंपोज रो डॉक्यूमेंटेशंस राइट तो तमे कंप्लीट रेफरेंस को जीवो डॉकर कंपोज रो ओके तो ये रेफरेंस रे जो कंपोज फाइल रोची राइट कंपोज फाइल जीवो तो ये केमती कोन कंपोज फाइल तार सर्विसेज केमती कोन लिखिबो राइट कंप्लीट डिटेल्स रे डिफाइन सर्विसेज इन डॉकर कंपोज राइट ये विषय कंप्लीट डिटेल्स रे हमर एटा अवेलेबल अछि विथ एग्जांपल्स देखो विथ एग्जांपल्स तो ई हिसाब रे तमे कोन डॉकर कंपोज यूज कर पाइबो बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे आधे हमें ईच एंड एवरीथिंग वी कैन नॉट कवर राइट सो तमे कोन करबो ना जहां भी डिटेल्स रे मु तो जति भी माने एट्रिब्यूट्स हमें जा देखिले राइट तो कंप्लीट जहां भी अधिका तमे काम करियो जाउ छ राइट मोर so we can get everything all the attributes here see
सब जगह तुम डिटेल्स रे पाई परिबो बिल्ड आमे जानिले राइट ये सब कंप्लीट डिटेल्स रे तुम पाई परिबो एनवायरनमेंट भी आमे देखितले एक्सपोज भी देखितले राइट ये सब डिवाइस सर्विसेज राइट तो कंप्लीट डिटेल्स रे हम पाई जो देखो बहुत सारा एटा कंप्लीट बिग डॉक्यूमेंट्स अछि तो तुम टास्क हला तमे निजे एटा गोटे क्रिएट करो अब बाकी सब जहां भी सर्विसेज जो पार्ट्स अछि राइट कंप्लीट डिटेल्स रे तमे आकु देखो तापरे मते जे किछि भी डाउट आछी देन जस्ट आस्क मी ता छडा आउ गोटे प्रोजेक्ट अछि जोटा कि हमरो ए पर्टिकुलर पाथ राइट तमे जदि जिबे हमर प्रोजेक्ट रे देन वी हैव अनदर डॉकर कंपोज जोटा कि वर्डप्रेस रे केमती वर्डप्रेस केमती इंस्टॉल करिया कंटेनर रे राइट वर्डप्रेस केमती डिप्लॉय करिया कंटेनर रे सेटा नै कि तमे ट्राई करि परिबा ओके ये डिटेल्स यदि कि थाउ आज पई तो मैं चाहूँ ये सब जाक जहाँ भी अच्छी यूज करने हाँ जहाँ भी आम देखले डॉकर कंपोज रे राइट तो आम जो तुमको देखुली जहाँ भी आम सर्विस लिखी डाटाबेस सर्विस जो थी कि आम यूजर आईडी पासवर्ड वी हैड सीन राइट पासिंग एज ए प्लेन टेक्स्ट right I said that's not the right way to do but as we were doing demo I just showed it but there are another things we are going to use as secrets okay केमती हमें docker compose रे secret use करिके secret attributes these are the attributes right secret attributes to keep the data as secret see ए हिसाब रे हमें दीटा एग्जांपल सेठी अछि केमती हमें secret use करिके secrets सर्वर सर्टिफिकेट तमे किछि यूज करछो बा किछि एनवायरनमेंट किछि टोकन तमे यूज करछो देन वी कैन गो अहेड एंड यूज दिस वे ओके तो सीक्रेट्स तमे यूज कर पारे जदि किछि क्वेश्चंस पचले देन यू कैन यूज दिस सीक्रेट्स बस वॉल्यूम्स तो हमें जानी छे ऑलरेडी नेटवर्क्स तो हमें जानी छे ऑलरेडी हमें डॉकर क्लासेस रे ऑलरेडी वॉल्यूम्स ऑफ नेटवर्क्स बट केमिति यूज करबो डॉकर कंपोज रे एटी ता डिटेल्स रे देई छी ओके